Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We start with technical and derivatives outlook. So yesterday we again saw that India's Nifty is traded with positive bias and Nifty gained 126 points on the higher side. The Nifty close was 17,665. So basically, there were few selected auto and FMCG stocks which were under pressure, but most of the out of 50 stock, 39 stocks in Nifty has closed in green. So overall, we sense the Nifty is still the index is moving in a sideways stretch, and Nifty has to still trade above 17,800 levels. So as and when 17,800 level is taken out, then there will be some kind of positive. So there can be some kind of positive momentum. So bias for the Nifty is sideways, but what we observed in yesterday's session was in Bank Nifty. It almost tested the high of close to 40,000 in the future index. So that can be the one. In Bank Nifty, we are observing that once whenever it starts trading above 40,000, there can be a short covering. So overall, the bias for the index is slightly range bound, but for the Bank Nifty, we believe there can be a little bit of short covering the higher side. So previously the Bank Nifty has seen a high of 41,800, so that should be the higher side target for the Bank Nifty, just in case if we see the short covering. Overall, the FIS data are still not very. They are still short in the market. So, but the long short ratio is 22%. Uh, we believe there would be Nifty might come close to 17,800, but then we need to see how we see the close. Only if there is a volume breakout or very good breakout, then we'll see the further upside in the Nifty. But having said that, Bank Nifty is definitely strongly placed. So if Bank Nifty moves, then definitely there would be some strength in the Nifty also. So overall, the view for the day is bullish. On the higher side, Bank Nifty will see a short story. The call which we are taking for the day is Dixon. We have a buy in the range of 4,200 to 4,220 on the stop loss. Stop loss is 4,099 for the target price of 4432. That's all from the technical end. Over to Varun for more updates. Yeah, thank you very much, Brijesh. So from research side, a couple of updates. First on first, NCLT has ordered PVR and Inox to convene shareholder and creditor meetings to consider and approve proposed merger between both the companies. So this is a positive development. We understand that currently only thing that needs to be watched out for is the requirement for CCI approval, as a request for the same has been filed by the company. Second update is Brahmastra has received a strong advance booking as it sold around 12,000 odd tickets. So this positive response for Bollywood movie comes amidst a series of flop movies this year. So also it is said to become biggest Bollywood release this year, as it is expected to release and on 8,000 screens worldwide. So this is a very positive development for PVR and Inox with respect to their earnings. And such a strong response is expected to revive demand for Bollywood movies. So we currently have buy rating on PVR with a target price of 2215 and hold rating on Inox with a TP of 665. Next update is on Tamil Nadu Mercantile Bank IPO. So issue opens on 5th of September. So type of offering, it's a fresh issue. Roughly 790 to 832 crore is the offer size and price band of 500 to 525. Uh, Object of issue is to augment tier 1 capital base of the company to meet future capital requirement and to receive benefits of listing the shares on stock exchanges. So about the company, incorporated as Nader Bank Limited in 1921, Tamil Nadu Mercantile Bank is an oldest and leading old private sector bank in India with a history of almost 100 odd years. So bank offers a wide range of BFSI products to
micro, small and medium enterprises, agriculture and retail customers. As on March 31st, 2022, bank has 509 branches, of which 106 branches are in rural India and 247 in semi-urban, 80 in urban and 76 in metropolitan centers, with overall customer base at around 5 odd million. So key investment rationale for the company is the asset quality has improved significantly over last 3 years and is the best among its peers, whereas the net interest margins has improved by 46 basis point over last 3 years. So FY 22, and even net interest margin is kind of better among the other competitive banks. Yeah, so major dependent uh, I think the only point of caution is roughly 38% of paid up share capital is subject to outstanding legal proceedings which are pending at various forums, and in connection with which proceeding against banks have been initiated by various regulatory authorities, including RBI. So management has not clarified on impact of the same due to prejudice matter. Thus, risk of any material impact on stock price could be seen post the judgment. So I think other than this, the IPO looks quite attractive. Yeah. So this was on the IPO. Next update is on Tata Motors. So Tata Motor is which is India's largest commercial vehicle makers. So they are investing up to 4,000 crore in next 2 years to revamp and rationalize its product portfolio and introduce cleaner powertrains, seeking to meet future emission norms for the industry. A company will be rolling out new flexible vehicle architecture starting April 2023. So we understand this is a positive news for the company. And the last update is on Indian pharma sector. So Indian pharma market grew 12% in value terms and roughly 5% in volume terms in the month of August compared to last year. We understand that the market recorded sales of roughly 16 odd thousand crore in the month of August. So overall, this was a decent performance by the sector, and which should augur well for companies in the pharma space. So that's it from my side. I now request Hitesh to take over the call. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. I will continue further. State and NDBC has said it's planning to divest its stakes in few subsidiaries and joint ventures. First of all, it will going to disinvest in NTPC Sale Power Corporation, that is NSPCL, and NITCO through private placements and IPO. The official said, and this stake sales will be part in the total 10,000 crore in the span of 3 years. And they are trying to divest some stakes under asset monetization scheme, and they are going to sell these stakes. Secondly, in Jubilant Foodworks, the company has announced that Samir Ketrapal, which they had has been appointed as the CEO with effect from September 5 for the next 5 years for the Domino's chain. And this they have also they got approval from shareholders in the 27th AGM that was on August 30th. Thirdly, in Aditya Birla Fashion also said that the chairman said that it could surpass the target reaching of 21,000 crores annualized revenue by 2026, and they are also confident they are going to set more milestones and further going ahead in the 15th AGM. Narayana Hrudayalaya is going to acquire a Bengaluru-based orthopedic and trauma hospital for a 200 crore sum. The company has also signed a transfer agreement with Shiva and Shiva Orthopedic for this agreement. Dixon Technology is pivoting from a prescription manufacturing service to an original device manufacturer for smart TVs, and they have also acquired some licensing rights for Google TV and Android TV from Google. These rights were announced on Monday from both design and manufacture of smart TVs and LED for third-party ones. That's it from mine. I'll hand over to Prabhakar sir for more updates. Thank you. Thank you, Yatendra. Good morning, team. Today, there are news that there will be a block deal in Syngin. The promoter group is Biocon. They might sell a part stake in the company soon at a discount of 5%. And Biocon holds almost 70% stake there. And Syngin is in contract manufacturing. So it is a unique business and they are doing very well.
Now, what is the reason for Biocon selling stake in Syngene? Not known as of now. There are a lot of negative news on SpiceJet. Now, the latest news is no, they have not paid TDS and even employee provident fund. No, and from February 2022. So this is very negative. No, I feel this is going the Jet Airways or Kingfisher way. So people who are holding the stock should avoid further any stake in the stock. They should try and exit. At least they will come get some capital. IEX, now the volume drop year-on-year basis is 18% to 7,805 million unit in August, while it has registered 9% growth month-on-month. Slightly negative numbers if we go by that. Supreme Court has provided relief to Adani Port for bidding process to upgrade Jawaharlal Nehru Port Trust in Mumbai container terminal, Navi Mumbai. So it is positive for Adani Port. Now in Adani Group stock, Adani Port has a very good business, and Adani Wilmar is run by Wilmar Group, which is a MNC company. So both these stocks we like. Dixon Tech said it has entered into an agreement with global tech giant Google to make LED TV sets and on Android and Google TV platform. It is called Smart TV model. Demat account, the total Demat account in India has crossed 10 crore. It is a landmark in August. In January 2020, now we were around 4 crore Demat account. So hardly with more than 2.5 years, we have more than doubled. It is almost 2.5 times rise from that level. CDSL is having 7 crore 16 lakh account. NSDL is having 2 crore 89 lakh account. But there is a difference when it comes to value. Now, NSDL value is 320 trillion rupees, whereas CDSL, which is almost 3 times of what NSDL is having, it is just less than 10% at more than 10% at 38.5 trillion. So there is a huge difference. The NSDL accounts are quality accounts, so they hold almost 9 times the value of CDSL. CDSL are more of traders, so they don't have a demat value, or maybe the account is open and they don't trade. That is the difference I see there. So the people have to understand that. REC seeks not to raise 75,000 crores via bond in AGM. Singapore GRM has jumped 48% to $8.7 per barrel. Tata Motor has launched country's first CNG truck in medium and heavy commercial vehicle segment, 28 ton and 19 ton. So it is slightly positive for Tata Motors. There is one data which says that nearly 5 lakh homes worth 4,48,000 crores are stuck in 7 metros. Now, this report is given by Anarock, which is a real estate database agent. And they said NCR plus Mumbai account for 77% of this truck houses, value wise. Then Pune accounts for 9%, Kolkata 5%, and rest 3 metros, Chennai, Bangalore, and Hyderabad to total 9%. So 77% of the total 4,48,000 crores. The struck property is there in NCR and Mumbai alone. And Hindustan Aeronautics, they have given their con call details, which happened in August 30th or 31st. So I posted in the group and even in the Telegram channel. Very interesting in Hindustan Aeronautics is order book. They have 84,800 crore of order book. Now they have cash flow of 14,000 crore. And here government orders are done by HAL, and government pays in advance for execution of these orders.
So it is called negative cash flow. So you get the money in advance and then you procure. So they don't have debt in their this thing, and they have said that order pipeline where they are expecting it is another 45,000 crores, and this thing is very good. The prospect of this company is very good. There are a lot of things they can do. So no, I think defense related stock, any correction would be an opportunity to buy. And yesterday Federal Bank made an all-time high after a very long time. After 59 months of consolidation, Federal Bank made an all-time high. So I think any correction would be an opportunity to buy Federal Bank. Federal Bank is not going to stop. Even Karur Vysya Bank, it also saw a very good rally yesterday. Mahindra Holiday Resorts made almost 4 years high. I think very soon it will cross all-time high. Indian Hotel again yesterday was an all-time high. So one has to be very stock specific. Hotel as a sector is doing very good. And banking as a sector, Nifty has not crossed last month high, whereas Bank Nifty has crossed. So banking is where interest is there, and we like smaller banks like City Union Bank, Karur Vysya Bank, Federal Bank, IDFC First Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, which can outperform the larger peers. So with that, over to Shritija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. कल ये एक अपडेट था कि एनसीएलटी है, उन्होंने अप्रूव मतलब बोला है कि वो पीडो और आइनॉक्स के साथ जो शेयर होल्डिंग और क्रेडिटर्स है उनके साथ वो मीटिंग करेंगे, जो उनका मर्जर है दोनों एंटिटीज में उसके लिए, और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है दोनों आइनॉक्स और पीवीआर कंपनी के लिए. सो ये थिंग है कि ये उसके ऊपर जो अपडेट आएगा वो चेकआउट करने वॉच आउट करने जैसे रहेगा कि सीसी अप्रूवल क्या होता है वो. और सेकंड अपडेट वही है उसके ऊपर कि ब्रह्मास्त्र को स्ट्रॉन्ग एडवांस बुकिंग हो चुका है. अराउंड 12,000 और टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं. तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है बॉलीवुड मूवीज के लिए अभी तक जो फ्लॉप सीरीज और फ्लॉप मूवीज आए उसके बाद. तो ये और ऑल्सो इसके अलावा बोल रहे हैं कि ये साल में एक्सपेक्टेड है कि बिगेस्ट बॉलीवुड रिलीज जो है वो अराउंड 8,000 स्क्रीन में वर्ल्ड वाइड होगा. सो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा पीवीआर और आइनॉक्स के लिए उनके अर्निंग के पर्सपेक्टिव से. और करंटली जो टारगेट प्राइस है पीवीआर की वो 2,215 है और आइनॉक्स की टारगेट प्राइस है 665 लॉन्ग टर्म के हिसाब से. नेक्स्ट अपडेट है एक आईपीओ आने वाला है बैंकिंग में. इशू डेट जो है 5 सितंबर से है स्टार्ट डेट, और उसका जो फ्रेश इशू है वो 790 और 832 करोड़ के अराउंड है. कंपनी के बारे में बोले जाए तो वो कंपनी ऑफर्स करती है बीएसएफआई टू रिटेल एग्री कल्चर जैसे सेगमेंट में कस्टमर्स को. तो असेट क्वालिटी लास्ट इम्प्रूव हुई है लास्ट 3 years में. तो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो अट्रैक्टिव है. देन टाटा मोटर्स के ऊपर एक अपडेट था. टाटा मोटर्स जो कंपनी है वो कमर्शियल व्हीकल मेकर है जो इन्वेस्ट करने वाली है 4,000 करोड़ नेक्स्ट 2 years में, जो रिवैम्प और रैशनलाइज करेंगी जो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और जो इंट्रोड्यूस करेंगी नए क्लीनर पावर ट्रेंड्स, जो फ्यूचर जो उनका एमिशन है इंडस्ट्री का उसके लिए, और जो फ्रेश पिकअप है सेल्स वॉल्यूम का वो स्केल अप करेगी. नेक्स्ट अपडेट है इंडियन फार्मा के ऊपर. इंडियन फार्मा के ऊपर ये अपडेट है कि 12% सेक्टर ग्रोथ हो रही है वैल्यू वाइज और 5% वॉल्यूम वाइज ग्रोथ हो रही है इन अगस्त मंथ में. तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ये सेक्टर ने. नेक्स्ट अपडेट है नारायण हृदयालय के ऊपर कि ये एनएच नारायण हृदयालय है, उन्होंने बोला है कि वो अक्वायर करेंगे बंगलुरु बेस्ड ऑर्थोपेडिक एंड रोमा हॉस्पिटल और जो उसका वैल्यू है वो 200 करोड़ है. और ये कंपनी बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट करेगी शिवा एंड शिवा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, जो अक्वायर होके ऑर्थोपेडिक एंड रोमा हॉस्पिटल जो कंसर्न होगा कि स्लम स्केल बेसिस. उसके अलावा इनको उनकी जो असेट लायबिलिटीज एम्प्लॉयज लाइसेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट है वो रेगुलेटरी फाइलिंग में हो जाएगा.
नेक्स्ट अपडेट है डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर। डिक्सन टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने बोला है कि वो प्रिस्क्रिप्शन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है उसमें एंटर करने वाले हैं, जो ओरिजिनल डिवाइस मैन्युफैक्चर ओडीएम स्मार्ट टीवीज के लिए होगा, और वो अक्वायर करेंगे सब लाइसेंसिंग राइट्स जो होगा गूगल टीवी और एंड्रॉयड टीवी से, जो गूगल से होगा। और ये जो राइट अनाउंस हुआ है वो कल ही हुआ है, और जो उसके लिए फर्म ने डिसाइड किया है कि वो डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग स्मार्ट एलईडी टीवीज थर्ड पार्टी ब्रांड से करवाएंगे। देन नेक्स्ट अपडेट है आदित्य बिरला फैशन के ऊपर। कंपनी का जो टारगेट था रीचिंग 21,000 करोड़ एनुअलाइज रेवेन्यू बाय 2026 वो सरपास हो रहा है, और वो हायर माइलस्टोन जो बिजनेस में है वो आगे जाके होगा, ऐसे चेयरमैन ने अपडेट किया है। और कंपनी ने प्रोजेक्ट किया है कि वो रेवेन्यू 21,000 करोड़ ईयर 2026 में ड्यूरिंग मतलब जो एनुअल उनका इन्वेस्टर था 2021 में वो बोला था। सो कंपनी ने एक अपडेट दिया है, उनके जो 15th एजीएम हुई थी कल उसमें। नेक्स्ट अपडेट है जुबिलियंट फूड के ऊपर। जुबिलियंट फूड ने अनाउंस किया है कि समीर खेत्रपाल जो है जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, और जो इसका इफेक्ट रहेगा वो 5 सितंबर से पीरियड का स्टार्ट होगा 5 इयर्स के लिए। एनटीपीसी जो है वो उन्होंने बोला है कि उनका प्लान है कि वो डाइवेस्ट करेंगे स्टेक टू सब्सिडरीज ऑन जॉइंट वेंचर में। तो उसके उसमें इंक्लूड है कि एनटीपीसी सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज एनएसपीसीएल एंड नेपको, और ये जो स्टेक सेल होगा वो प्राइवेट प्लेसमेंट एंड आईपीओ के थ्रू होगा। और ये ऑफिशियल अवेयर डेवलपमेंट जो है कंपनी ने बोला है कि स्टेक सेल जो है कंपनीज का असेट मोनेटाइजेशन प्लान है, और जो रेजिंग 10,000 करोड़ है मतलब लास्ट 3 इयर्स में किया है। तो कंपनी ने बोला है कि ये जो असेट मोनेटाइजेशन है वो अंडर लाइक बोल रहे हैं ना कि सेल करेंगे एनएसपीसीएल और एनटीपीसी सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, और सम स्मॉलर और 3 है जॉइंट वेंचर उनसे। सो नेक्स्ट अपडेट है कि ब्लॉक डील सिंजन में होने का चांसेस है, आज होने वाली है, और वो बायोकॉन स्टेक सेल करने वाला है डिस्काउंट 5% पे अराउंड। तो कंपनी काफी अच्छी है सिंजन पर, बट बायोकॉन स्टेक सेल करने का रीजन अभी तक पता नहीं है, तो वो देखने जैसा होगा। नेक्स्ट अपडेट है निगेटिव न्यूज है बहुत सारी स्पाइस जेट के ऊपर। अभी की जो रिसेंट न्यूज है उसमें कंपनी ने उनका जो एम्प्लॉयज का टीडीएस और एम्प्लॉयज का जो प्रोविडेंट फंड है वो पेड नहीं किया है। तो बहुत सारी न्यूज नेगेटिव आने के कारण हम लोग सजेस्ट करें कि आपको ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक आगे जाके जेट एयरवे जैसा हो सकता है, तो आप इससे काफी दूर रहना है और स्टॉक को अवॉइड करना है। आईएक्स की बिजनेस अपडेट आया तो उनका वॉल्यूम में ड्रॉप हुआ है 18% ईयर ऑन ईयर, और 9% की ग्रोथ है वो मंथ ऑन मंथ है, बट स्लाइटली नेगेटिव नंबर्स आए हैं। 10 जो डीमैट अकाउंट के नंबर्स आए थे उसमें टोटल डीमैट अकाउंट है 10,000 करोड़, सॉरी 10 करोड़ क्रॉस किया है। और जो अभी सीडीएसएल जो जनवरी में थे टोटल डीमैट अकाउंट अराउंड कुछ 4 करोड़ के था, तो अभी हम लोग 2.5 टाइम्स सरपास किया है। जो ये नंबर्स है वो सीडीएसएल में 7 करोड़ 16 लाख है, और एनएसडीएल में 2 करोड़ 89 लाख डीमैट अकाउंट है। तो एनएसडीएल हम लोग वैल्यूएशन वाइज देखें तो 320 ट्रिलियन है उसकी जो वैल्यू है, और सीडीएसएल की 38.5 ट्रिलियन है। तो ये डिफरेंस है वो ह्यूज है। एनएसडीएल के पास क्वालिटी अकाउंट रहता है और सीडीएसएल के पास अप्रोक्स ट्रेडर्स है जो अकाउंट खोलने पर ज्यादा इतना ट्रेड नहीं करते हैं। देन सिंगापुर जीआरएम जंप हो चुका है। देन नेक्स्ट अपडेट है कि जो एक डेटा आया था उससे कि 77% कुछ हाउसिंग प्रॉपर्टी जो है वो स्टक हो चुकी है मुंबई में अलोन। उसके अलावा 5% के अराउंड कुछ कोलकाता में स्टक हो चुकी है, और जो चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद में कुछ परसेंटेज टर्म में जो हाउसिंग प्रॉपर्टी है वो स्टक हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट है एचएल के ऊपर। कंपनी के कॉन कॉल के डिटेल ऑलरेडी हम लोगों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट की है, तो आप एक देख सकते हो। ये वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट है कि अभी तक ऑर्डर बुक जो है कंपनी के वो 84,800 करोड़ है, और गवर्नमेंट ऑलवेज क्या करती है कि उससे जो ऑर्डर्स मिलती है एचएल को वो गवर्नमेंट की होती है, और गवर्नमेंट ऑलरेडी एडवांस पेमेंट करती है जो उनका ऑर्डर का एग्जीक्यूशन के लिए। तो डेप्ट उनके पास कोई भी नहीं है कंपनी के लिए। तो ये और उनकी जो नेक्स्ट ऑर्डर पाइपलाइन है वो 45,000 करोड़ है। सो एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है और काफी अच्छा स्टॉक है।
डिफेंस सेगमेंट में हम लोग आपको कब से बोल रहे हैं कि कोई भी करेक्शन आए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी डिफेंस सेक्टर के लिए। इवन कल बैंकिंग स्पेस में फेडरल बैंक ने ऑल टाइम हाई किया था, टच किया था 59.1 का जो कंसोलिडेशन है, उसके बाद ये ऑल टाइम हाई हिट किया है। तो फेडरल बैंक ये करेक्शन रहेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी करेक्शन में। MHRL भी कल अच्छा ऊपर था, 4 इयर्स हाई उसने क्रॉस किया और अभी और जल्दी से ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करेगा। इंडियन होटल भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो होटल इंडस्ट्री काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक भी काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो लास्ट मंथ का जो निफ्टी का हाई था वो निफ्टी ने अभी तक क्रॉस नहीं किया, बट बैंक निफ्टी ने किया है। तो अभी हम लोग होटल स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक पे पॉजिटिव है। और बैंकिंग सेगमेंट में आप स्मॉल बैंक जैसे कि CUB है, फेडरल बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और करूर वैश्य बैंक है, इसको आप देख सकते हो। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the con call. Have a nice day.